Hey, welcome to Let's Grow Together with Kalyan, Shruti and Richa. ये पॉडकास्ट सीरीज बनाया ही गया है टू लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ये ट्विटर स्पेस सीरीज को पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया गया है सो एवरीथिंग इज रॉ एंड अनफिल्टर्ड. You will hear the audience asking questions to the guest as well. कि ये podcast series is going to be super insightful. So come with an open mind and I promise you बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So let's start the podcast in 3, 2, 1. Welcome to the ninth episode of Let's Grow Together. And इस वाले एपिसोड में we are going to talk about the importance of weight training, especially for women. And ये जो स्पेस हम कर रहे हैं, श्रुति एंड आई एंड रिचा, हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम देयर फील्ड. एंड द होल पॉइंट इज कि उनसे सीखने मिले हमें जितना सीखने को मिल सकता है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट जिनी is a full-time software engineer, and recently she has become a ICN gold medal sports model first timer 2022. So first of all, congratulations Ginny for that. Thank you, Kalyan. Thank you so much. That's great. So what we'll do is हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड पीपल विल कीप जॉइनिंग अस. तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू is the fitness that you got into, like the fitness industry I would say, या फिर fitness as a journey जो आपने start किया है, how did you got started with this one? Would you like to elaborate on this? Yeah. Okay, so I will not explain here a boring story like everyone wants to get fit or look good. It actually accidentally happened that I was always a overweight kid, but nobody body shamed me. People around me were very positive with me. But it was just that once, like I was a single child. I'm a single child, so I'm more used to like pampering and all. So my whole routine was going to school, coming back, watching TV, and eating. Okay. So one fine day back in 2014, 2015, when I was in my college final year, my mom just said that let's check your weight. Okay. So we went to a nearby gym because I don't have much of the physical activities. I was not much into the physical activities by the time I reached college. So it showed up 95 kgs on the weighing scale. And that's when my mom said, I don't want to see a quintal on that. Okay. So she said, I don't want to see a quintal on that. So you start something physical activity. So you start going to the gym. But eventually it happened as you are into engineering and you are into your final sem, you get placements. And in 2015 July, I started in April, but in July, I went to Chennai to join my first company as a placement. And therein, this is how my journey just started. I used to just utilize my free time going to my office gym, work out, and then as a fresher, you have training. And I used to come home because I don't have much of great cooking skills, so I just knew how to cook dalia. I just knew how to cook the basics, or I used to eat in the college canteen like idli dosa because South Indian was my all-time favorite. So, and I just knew that calorie in versus calorie out. So I used to burn and I used to eat that much I'm burning. So that eventually started back in 2015 for me, and it never stopped till today. So, That is amazing. Yeah. yeah. ओके. सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस चीज पे है कि इफ यू हैव टू ब्रेक डाउन योर मैक्रोज फॉर अस, आप टिपिकल डे में ब्रेकफास्ट टू डिनर क्या खाते हो? Okay. So, if I talk about a typical day, that I am currently also eating around 2000 calories, which is like my maintenance calories, 2000 to 2300. And I usually keep up my protein intake high. So, it's around around 157 grams of protein right now. So, in my whole day, I eat eggs, chicken because I'm a non-vegetarian. I do take whey protein. Okay. And then for the carb sources, I prefer eating oats, bread, brown rice because I love the taste. It's not because it's healthy or it will help you lose weight faster. But I typically like brown rice. And then for fats, I take whole eggs, okay, which involves your protein also. And then your normal ghee, kharka, and then the lentils.
And apart from that, for probiotics, I use like I'm a Punjabi, so I like my curd and dahi and lassi. So I take that in a typical day. Fruit sometimes or sometimes not, depends upon if I want to eat or not. And then vegetables. So गॉट इट. that's how my typical day. तो मैक्रोस कितना होता है उसका, लाइक प्रोटीन में कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कितना होता है, फैट्स में कितना होता है? Okay, so for the protein part, I keep around 157 grams of protein to 160, depending right now, like in general maintaining part. And then my fats are around 45 to 50 grams. And the rest in my calories, like sum up with the carbohydrates, which ओके. comes from almost all the food sources. ओके, तो मैं एक बार ब्रेक डाउन करता हूँ, जिन्हें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो मेंटेनेंस कैलोरी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, बेसिकली इट इज द कैलोरीज दैट यू नीड टू मेंटेन योर करंट वेट. जो आपका वेट है उतना मेंटेन करने का आपको कितना कैलोरीज खाना है. नाउ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर थ्री मैक्रोज. नाउ उसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे एक मेंटेनेंस कैलोरी में, तो if I'm not wrong, then जो ब्रेक इट डाउन फॉर मी जिनी, कैसा होता है, लाइक 4 grams ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू. So, 1 gram of protein is equals to 4 calories. करेक्ट, 1 gram या. of carbohydrates is also 4 calories. Fats are slightly calorie dense food items. Okay, so 1 gram of fats is like 9 calories. So it 9 takes major. They are calorie dense. Like if you talk about nuts and all, like oil, they are calorie dense food items. So you should take around 20 to 35% of your total calories as per recommendations. करेक्ट. तो अभी अगर आप अभी किसी को सुनोगे कि 2000 कैलोरीज खाना है, तो बेसिकली वो ब्रेक डाउन ऐसे ही होता है कि अगर आपने 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिया है तो उसमें 4 कैलोरीज आपको मिले हैं. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिया है तो उसमें आपको 4 ग्राम ऑफ, सॉरी, चार, 4 calories. हाँ, 4 कैलोरीज मिला है. एंड 1 ग्राम ऑफ फैट लिया है तो आपको 9 कैलोरीज मिला है. सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई एंड फिगर आउट कि आपके कितना कैलोरीज आपने ओवरऑल लिया है पर डे में. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑन मेंटेनेंस. और इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आउट देयर जो आप बेसिकली अपना फूड डालोगे, थोड़ा सा इधर उधर तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि हम उसको वे नहीं कर रहे हम बेसिकली कोई खाने को. अगर कर रहे हो दैट इज ग्रेट, आपको पूरा एग्जैक्टली पता होगा कि आपने कितना खाया है. सो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने कितना बेसिकली कैलोरीज इनटेक हुआ है. नाउ व्हाट जीनी इज ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट, दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू, राइट. आप जितना भी खा रहे हो, उतना ही आपको बेसिकली उससे ज्यादा आपको बर्न करना है इन ऑर्डर टू लूज फैट, राइट जिनी? Yes. So आपको अपना एक एक्सपेंडिचर कैलोरी लाइक हाउ मच यू बर्न कैलोरी कितना बर्न करो एक दिन में इट कैन बी विद द एक्टिविटीज लाइक गोइंग टू द जिम एंड ऑल और डूइंग योगा or the normal day-to-day walking activity or you're standing, these all include your energy expenditure. And जितना आप calories ले रहे हो body में, तो अगर उसका negative होगा like less calorie intake, then you burn, then you lose fat, and if you take more calories than you need, like you are burning, then you are gaining. That's the like in the simple layman terms for the generic population, if I would say that is whole it is the health what you talk about losing and gaining. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर दैट जिनी. जिनी, जब हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो मैं एक ब्रेकडाउन रिगार्डिंग द एक्सरसाइज आपसे जानना चाहूंगी कि लाइक वेट ट्रेनिंग में और जो कार्डियो आप करते हो उसमें हाउ डू यू ब्रेक डाउन इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू दिस रिजाइम, तो उनको कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए, लाइक वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, कैसे वेट ट्रेनिंग को कितना करना चाहिए, कार्डियो को कितना करना चाहिए? Okay, so there is no like a sure shot like how you define a macro. It's not like for your exercise also. Cardio you do just for your cardiovascular endurance, okay? And weight training you do just for your strength and muscle building and everything, okay? It depends upon person to person. If I talk about a general population, and if you're a complete beginner, okay, if you're just stepping into this, then I would recommend that like people should go for like out of
5 days if they are working out, 3 days they should do a full weight training, like full body weight training. It could be with the resistance band or gym weights or a whole body weight, okay? And cardio you should do like twice a week just for that gap. So I would not recommend much of cardio, because if you do a lot of cardio, then yes, it will somewhere lead to a muscle loss. Whereas when you weight train or you do a resistance training, तो आपका muscle gain होता है, muscle preserve होते हैं basically जो आपके पास है. तो that should be a ratio. आपको दोनों का balance बना के चलना पड़ता है अगर आपको cardiovascular strength और endurance भी रखना है. Understood. Great. Okay. So I would like to know. अच्छा, एक study I have gone through in which it was mentioned कि जो men होते हैं वो bone density start to उनका lessen होने लगता है over the age of 50. Now women के केस में post menopause this phenomena happens. बहुत rapidly होने लगता है, bone density कम होने लगता है. Now the effective way to stop something like this is to do weight training, एंड द हेवियर यू डू ज़्यादा बेटर है. नाउ अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो आई वुड लाइक टू नो कि आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो, आपने काफ़ी टाइम से कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग का सेशंस होता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ पे, आपके मूड पे, कोल्ड होता है लोगों को, आपका कैसा इसके साथ ये है, प्लस डाइजेशन कैसा है, प्लस पीरियड्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ओवरऑल लिफ्टिंग ने आपको कैसे हेल्प किया है? वुड यू लाइक टू say something about that, Jenny? Okay, so if you talk about bone density and all, तो obviously जो health है as you age, वो loss होता है, and especially for women, if you go for menopause and after a certain age, like it's around 40 to 50 के आसपास उनका start हो जाता है बहुत से, it's observed, तो वो रेट ज्यादा होता है. बट this cannot be stopped or reversed completely. I would say nobody will say that, but it can be reduced or maintained. Like if you do a weight training and you have a balanced nutrition, आप overall अपनी health का ध्यान रख रहे हो, तो these things like these diseases or like osteoporosis and all which happens, yeah, arthritis, this the risk can be reduced. Okay. एंड इफ आई टॉक अबाउट मी, लाइक मुझे इतने सालों में क्या इफेक्ट, तो ओवरऑल ऑफ कोर्स हेल्थ बहुत बेटर हुआ है. इफ आई टॉक अबाउट लाइक द कॉमन फ्लू लाइक कोल्ड कफ एंड ऑल, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आई डू ट्रेन ऑन दोज डेज इफ माई बॉडी इज अलाउइंग, और मेरा कोल्ड या वो जल्दी हील हुआ है कंपेयर टू हाउ यू टेक मेडिसिन जिससे सप्रेस ही हो जाता है. तो दैट वे ऑल्सो इट वेंट. एंड हाँ, इफ आई टॉक अबाउट माई पीरियड्स एंड ऑल, I used to have a very painful period when I started getting that. But over the years, जैसे जैसे weight training में मैंने progress किया या I entered weight training, तो मेरा वो जो पेन है वो ईज हुआ है, एंड मेरे साइकिल्स आर लाइक गुड जैसे होने चाहिए. लाइक आई फेल्ट नॉर्मल. इनफैक्ट अगर आप पीरियड्स पे जाके वेट ट्रेन करते हो, तो लाइक एक्सरसाइज डज रिलीज अ हार्मोन कॉल एंडोर्फिन्स. तो उससे क्या होता है, आपका रिड्यूस होता है पेन. ठीक है, मेरे केस में तो बहुत रिड्यूस होता है. आई ईज आउट बिकॉज आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपका मूड बेटर होता है, आपको स्ट्रेस है तो कम होता है. तो दीज चेंजेस आई हैव ऑब्जर्व्ड अगर मैं वेट ट्रेन कर रही हूँ. सो आई स्पेशली मेक श्योर कि अगर मेरे पीरियड्स है तो आई गो एंड ट्रेन इफ माई बॉडी इज अलाउइंग. तो वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल हेल्थ में भी. Got और it. तो ये चीज कार्डियो के साथ भी है या फिर इट्स जस्ट विद द वेट ट्रेनिंग दैट पीरियड्स का एंड एवरीथिंग? no, it applies to both weight training as well as your cardio. Basically, you should move physically. Women क्या करते हैं? They just relax. I'm not saying you shouldn't rest. If your body is not allowing, you should listen to your body. But हाँ, आप जाके try करो. If you walk if you are in severe pain of periods and you go out and walk or do a cardio or do a normal cycling, you feel better क्योंकि आपका body ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आपको बेटर लगता है. आई एम नॉट नेसेसरी सेइंग कि आप वेट ट्रेनिंग जाके करो, नॉट लाइक अ गुड थिंग टू से. बट हाँ, आप वो भी कर पा रहे हो तो वो ईज आउट कर देता है आपके. लाइक देर आर लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सबने सुना होगा, लाइक पीसीओडी एंड पीसीओएस इज वेरी कॉमन इन वुमेन. ओके,
Like out of 10 women, at least 8 or 9 women will have that. Even I had it, like the minor one. But मुझे कभी वो medications के through जाना नहीं पड़ा. Okay. It helped me with the lifestyle changes, which is your involving a physical activity and a balanced nutrition. Especially the weight training will help you. But this is the generic recommendation. गॉट इट। और एंड बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज ऐसा कुछ है आपके लिए कि सुबह अगर मैं कार्डियो करूँ या फिर एम्प्टी स्टमक या समथिंग लाइक दैट, व्हाट वुड यू से? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से बहुत ज्यादा फैट लॉस हो जाएगा ये वो, क्योंकि फैट लॉस इज बेसिकली योर कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट. बट कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट आई वुड से जिन लोगों को स्लीप साइकिल का इशू है, दे कैन नॉट लाइक ट्रेन क्लोज टू देयर गोइंग टू द बेड टाइम, बिकॉज उनका स्लीप इफेक्ट हो सकता है. So they should preferably train earlier in the day or in the evenings or like in the morning specifically. For me, over the years, from the evening person, मैं change हुई हूँ अभी morning person पे, because I have a schedule, because I'm a working professional. तो ऐसा कुछ specific नहीं है, जब आपका body allow करे, बस आप 30 minutes निकाल के भी जाओ, but जाओ. Amazing. Understood, Ginny. Thank you. Also, so today I would like to, because this topic is so different and good. इकबाल, आप थोड़ा माइक बंद कर सकते हो एक मिनट? So I want to debunk the myth about weightlifting for women. So, Ginny, what do you think is the real reason? Like women's, we all know, are not much into lifting weights and engaging in just cardio. And we know there is this myth that women will become bulky with weight training, but they just can't because men and women have different levels of testosterone to begin with. Also, Jenny, would you like to add something from your experience in this thing? And please share your view on the reasons behind. Okay, so if we talk about women lifting weights, I would say 110% or 200% women should lift weight. It's not like कि आप bulky हो जाओगे या manly, क्योंकि women में वो growth hormones होते ही नहीं है like men. Both bodies are different, okay? And as per if I have observed या मेरे experience में, uh, when you weight train, especially the women, उनका जो muscular mass होता है compared to men, the lean mass which we call about naturally, वो कम होता है. तो as the age grows, if you see, if आपने भी अगर आसपास ऑब्जर्व किया होगा, तो women में arthritis का इश्यू ज्यादा होता है compared to men. एंड मेंस में थोड़ा ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस होते हैं compared to women. Why? Because women have comparatively like stronger cardiovascular system than men. तो women को अपना वो बोन के आसपास का जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ाने के लिए वेट ट्रेन करना ही पड़ेगा, ताकि वो लॉन्ग टर्म में जाके उनको वो ये आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के इफेक्ट्स रिड्यूस हो. देयर आर लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन लाइक हर्ड अराउंड मी हु हैव लाइक लिटरली चेंज द लाइफस्टाइल, women जिनको ऑस्टियोपोरोसिस था और उनका काफी हद तक वो रिड्यूस हुआ है वेट ट्रेन करने से. एंड मेन शुड इन्वॉल्व लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एज वेल, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, हम वेट लिफ्ट करेंगे, बस हमारा बॉडी बन गया है. इट्स नॉट. इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन में. एंड एज यू एज, जैसे जैसे आपका एज बड़ा होता है, देन देर इज अ टर्म लाइक एज रिलेटेड फैक्टर होता है, लाइक द सार्कोपीनिया इट्स कॉल्ड इन द टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे Mhm. आपका स्केलेटल मसल या स्ट्रेंथ इवेंचुअली लूज होता है. ठीक है, तो व्हेन यू वेट ट्रेन, दिस ऑल्सो लाइक टू एन एक्सटेंट गेट्स रिड्यूस्ड as you age. So if I talk about my own mother, like she's turning 60 this month end, okay, and she weight trains, and she's also weight training from a quite long, like years, like since 7 8 years, like me. बट उनका भी मैंने केस देखा है कि उनके भी काफी सारे, लाइक शी वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद दिस ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस, वेरी माइनर इशू, बट उनका कभी पता ही नहीं चला बिकॉज शी वाज वेट ट्रेनिंग. ओके, शी हैड अ लाइक वेल मेंटेन बॉडी, तो उनका वो इशू कभी डायग्नोस ही नहीं हुआ, क्योंकि
वो थोड़ा रिड्यूस और कंट्रोल था, तो उनको कभी वो मेडिकेशन से जाना नहीं पड़ा। अब जब डायग्नोज हुआ है तो इवन डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब कि शी शुड कंटिन्यू हर फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट ट्रेनिंग, ताकि वो कंट्रोल्ड ही रहे। इट कैन नॉट बी स्टॉप द रिवर्स्ड, ओके, बट आपको वो कंट्रोल्ड रह सकता है। तो women शुड डेफिनेटली वेट ट्रेन, बिकॉज एज के साथ साथ आपका मसल लॉस तो होगा ही होगा, तो व्हाई नॉट टू प्रिजर्व और बिल्ड इट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट? या करेक्ट, एंड दैट मेक्स सेंस। एंड एक क्वेश्चन तो टेस्टोस्टेरोन के अराउंड था, सो इज इट समथिंग दैट कैन बी इंक्रीज्ड, लाइक हैव यू, मतलब दे टॉक अबाउट नेचुरली इंक्रीजिंग द टेस्टोस्टेरोन सो दैट लिफ्टिंग ज्यादा इजी पड़ पाए और मसल्स भी अच्छे से गेन हो पाए, सो व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव नोटिस्ड इन दैट? So if I talk about that, तो it involves like the steroids or injections जो लोग लेते हैं, especially if you talk about the bodybuilding field, that I would never say that कि उसको लेने से आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। या ऑब्वियसली अगर आपका टेस्टोस्टेरोन काउंट किसी की बॉडी में ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मसल ग्रोथ रेट विल बी फास्टर, जैसे मेन का ज्यादा होता है कंपेयर टू वुमेन, तो होगा। बट ऐसा नहीं है कि उससे कुछ स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, या like I can do a squat of 120 kg, 130 kg, being a woman naturally, और मे बी एक मेल नहीं कर सकता वो, उसको टाइम लगेगा, या वाइस वर्सा। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रेंथ वो एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कंप्लीट मिथ पीपल टेक टू हैव दैट मोर, मतलब उनको 6 महीने के रिजल्ट्स 2 महीने में चाहिए रहता है। इट इट विल लाइक, it's like that. Got it, got it. So we have two speakers who want to ask you questions. सबसे पहले इकबाल पे जाते हैं, इकबाल एंड देन रितिका पे जाएंगे। सो इकबाल, यस, पूछिए आपका क्वेश्चन। ओके, ये लाइक टेल मी वन थिंग, लाइक जब फीमेल ये साइकिल चलाते हैं तो वो उनका एंड्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या पीसीटी करने के बाद वो क्या हार्मोन्स वगैरह वो बैलेंस हो जाते हैं? Okay, can you say it again? बीच में your voice break. लाइक जब वीमेन जब साइकिल पे होते हैं, जब उनका साइकिलिंग Like चलती है, साइकिलिंग इन द periods, सेंस you स्टेरॉइड, mean? नहीं स्टेरॉइड Okay, स्टेरॉइड। steroid. Okay, हाँ okay. हाँ, तो क्या वो पीसीटी कराने के बाद जो उनका एंड्रोजन होता है क्या वो नॉर्मलाइज हो जाता है कि कुछ उसमें रहते हैं? तो honestly, इकबाल, this is like out of the box question for me because मैं steroids and all में बिल्कुल नहीं जानती. So I'm a natural athlete. तो मुझे बिल्कुल knowledge नहीं है about how this all happens or the steroid cycle or PCT thing happens. So I have really no information around that. ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके रितिका, यू गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। रितिका, आपकी आवाज थोड़ी सी लाउड, थोड़ा ब्रेक हो रहा था। या गो अहेड। हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है, हाँ, बोलिए। नहीं, रितिका अभी भी बहुत ब्रेक हो रहा है, इफ यू कैन हैव अ स्टेबल कनेक्शन। या ओके, एक बार ट्राई करिए रितिका, लेट्स सी हाउ इट इज। हेलो। या एक बार बोलिए कुछ। हाय एवरीवन। हेलो, हेलो। या अभी आ अभी रही है बेटर ठीक? है, यस अभी परफेक्ट है। या गो अहेड। सो हाय जिनी, मुझे आपसे पूछना था बिकॉज हाल ही में मैंने आई यूज टू वर्क आउट नॉट एज एक्सटेंसिवली एज एन एथलीट, बट हाल ही में when I was going through some medical stuff, health related stuff, I got to know that the female reproductive years में, which is like around 15 to 45, working out on a very like intense way can like disbalance the estrogen and hormonal levels, और जिसकी वजह से like हमारे जो ओवेरियन साइकिल है उसमें इश्यूज आ सकते हैं, पीसीओडी एंड और वो सब चीजें हो सकती है। तो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Okay, so if you talk about PCOD,
and this cycle change, these are two different things. दोनों अलग चीजें हैं. PCOD और PCOS, even I had been diagnosed back in 2014. It's a lifestyle disorder basically. आपका जो, अगर देखा जाए तो आज की डेट में we don't eventually have a very healthy lifestyle. We are adapting that lifestyle. तो हमारा ऐसा होता नहीं कि हम भैया घर का दाल चावल सब खा रहे. वी आर सराउंडेड बाय जंक फूड्स एंड ऑल. तो इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर विच कैन बी क्योर्ड जब आप अपना चेंज करते हो, हेल्दी हैबिट्स पे आते हो एंड ऑल. अब आप जो साइकिल की बात बोल रहे हो, तो विमेन का जो ये पीरियड साइकिल होता है, इट इफेक्ट्स तब जब आपका एक बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है. आपके हार्मोन्स को फंक्शन करने के लिए यू नीड अ पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज, राइट? तो यस, अगर आप बहुत इंटेंसिव, लाइक इफ यू टॉक अबाउट एथलीट्स एंड ऑल, उनका हाँ मे बी कंपेयर टू अ नॉर्मल वुमेन हो सकता है कि उनका पीरियड साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि वो फैट परसेंटेज, लाइक दे आर ऑन अ सिंगल सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज और वेरी लेस, क्योंकि वो लोग ट्रेन उतना करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आपको वर्कआउट्स बहुत इंटेंसिव करने से आपका साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा. आपको पहले से कुछ अगर इश्यू होगा, दैट माइट गेट लाइक एडवर्स द इफेक्ट, जो आपको ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट या ये लोग डॉक्टर्स से रिकमेंडेशन के थ्रू ही जाना चाहिए. बट जनरल पॉपुलेशन के लिए ऐसा नहीं होता है. लाइक मेरे पीरियड्स ऐसा नहीं हुआ कि ओवर द इयर्स चेंज हुए हैं. आई हैव अ रेगुलर साइकिल. और हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे तो एवरी फीमेल गोस थ्रू, बिकॉज योर साइकिल गेट्स रीसेट. इट्स ऑब्वियसली ऑब्जर्व्ड आफ्टर फ्यू इयर्स और फ्यू मंथ्स ऑल्सो. तो उससे कुछ आपको ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. Right, Ritika? Does that answer your question? Yeah. Thank you so much. ग्रेट. सो जिनी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आपको, इट्स अराउंड सप्लीमेंट्स. तो अब सप्लीमेंट्स की बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स होते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन, एंड प्रोटीन में देर आर टू मेन काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स दैट आर देयर. एक तो वे प्रोटीन हो गया और एक केसिन हो गया. नाउ ऑफ कोर्स केसिन जो बनता है वो काफी इजीली बनता है, बट अगेन उसको थोड़ा कॉस्टिंग हाई रखते हैं. Whereas whey protein उससे much cheaper है. What would you suggest, like if someone is getting into the whole जिम वाला थिंग, और अगर जिम भी नहीं जाते तो भी प्रोटीन की इंटेक तो जरूरी है, तो उनको वे प्रोटीन तो लेना पड़ता है. बट व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, लाइक पानी के साथ, दूध के साथ, और व्हाट अबाउट द केसिन? So we are just gonna talk about protein, and then I'm gonna ask you about other supplements. So let's go with the protein first. ओके, सो फर्स्टली ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिम जा रहे हो या यू हैव टू टेक वे प्रोटीन. ऐसा नहीं है. इट्स लाइक वे प्रोटीन और लाइक व्हाट यू टॉक अबाउट, इट्स जनरल फूड सप्लीमेंट. ओके, ताकि आपका जो प्रोटीन इनटेक है डेली का, सो रेकमेंडेड अगर अपन जाएं कि हाउ आरडीओ रेकमेंड्स, तो इट्स लाइक फॉर अ नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन इट शुड बी अराउंड 0.8 to 1.2 grams, ओके, ऑफ योर बॉडी वेट, पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट. तो इतना आपको, सपोज आप 1 ग्राम से जा रहे हो एंड यू वे 80 केजीज, तो आपको पर डे एटलीस्ट 80 grams ऑफ प्रोटीन यू शुड टेक इन योर बॉडी. एंड अब ये वेरी हो सकता है कि इफ अ पर्सन इज अ स्ट्रेंथ ट्रेनर और दे आर अ रनर और दे आर अ पावर लिफ्टर और एन एथलीट, तो ये वेरी हो सकता है ये सब रिकमेंडेड रेंजेस. बट इतना तो आपको लेना ही है. दूसरा, अगर आप फूड सोर्सेस से अपने कंप्लीट कर सकते हो प्रोटीन, ओके, लाइक पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे आर एबल टू, बिकॉज वो लोग एग्स, चिकन, फिश, ये सारी चीजें खाते हैं, ओके. अब वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज उनके सोर्सेज जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स डज गेट इन्वॉल्व. तो वो जो आपका मैक्रोस का जो कैलकुलेशन होता है रिकमेंडेड कैलोरीज में, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. तो इफ दे आर नॉट एबल टू लाइक कंप्लीट प्रोटीन फ्रॉम द फूड सोर्सेज, तो वो लोग वे ले सकते हैं, डिपेंडिंग अगर उनका बजट अलाउ कर रहा है या नहीं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. So whey protein you can take depending you can afford it or not. ऐसा नहीं है कि आप फूड सोर्सेज से अपना प्रोटीन, डेली प्रोटीन इंटेक नहीं कर सकते. There are a lot of food sources. Now coming to like the casein. तो casein is basically
more expensive definitely. Why? Because उसका जो प्रोसेस और मेकिंग होता है वो डिफरेंट होता है कंपेयर टू द वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन थोड़ा फास्ट डाइजेस्टिंग होता है। तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वे प्रोटीन ही लेना है या आपको कैसेन प्रोटीन ही लेना है। बस ये है कि दोनों का लाइक इजिली एब्जॉर्ब इन योर बॉडी इज लाइक या फास्टर डाइजेशन, तो वे प्रोटीन इज मोर फास्टर कैफीन से। गॉट इट। तो आप कौन से ब्रांड का वे प्रोटीन प्रेफर करती है? ओके, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड, बट जब आप वे प्रोटीन लेने जाओ तो मेक श्योर कि एक स्कूप विच इज अराउंड 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, और लाइक वो जो वेट होता है उसका एक स्कूप का, ठीक है, उसमें आपको एटलीस्ट 24 to 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिले। प्लस उनका जो ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट शुड बी लाइक लेस देन और इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ योर कार्ब्स एक सर्विंग में। एंड आपके सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं लाइक द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच इज देयर, वो हो, तो आप उसी अकॉर्डिंगली ही आप अपना ब्रांड का ऑप्ट कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक यू हैव ऑन, यू हैव आइसोप्योर, यू हैव डायमेटाइज, बट ये सब आपको देख के ही एक प्रोटीन लेना चाहिए। एंड ऑल्सो द ऑथेंटिक ब्रांड, लाइक आप डुप्लीकेट तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो अपनी बॉडी को बेनिफिट करने के लिए ले रहे हो, तो अगर आप डुप्लीकेट लोगे तो आपको वैसे भी कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? तो like this you should see while purchasing any protein brand. गॉट इट। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन क्रिएटिन? एंड क्रिएटिन से अराउंड बहुत सारे मिथ है, सो जस्ट ब्रेक डाउन व्हाट क्रिएटिन इज फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द मिथ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, बहुत लोगों को लगता है कि क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस भी होता है, Mhm. विच टू सम एक्सटेंट इज ऑल्सो ट्रू। मगर आपका क्या मानना है इसको लेके क्रिएटिन का? एंड व्हाई शुड वन टेक क्रिएटिन एज वेल? सो या। ओके, सो क्रिएटिन इज नॉट लाइक बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है कि नहीं आप वेट ट्रेन कर रहे हो तो आपको लेना ही लेना है, नॉट नीडेड। इट डिपेंड्स अपॉन अगेन पर्सन टू पर्सन, किस टाइप का आपका ट्रेनिंग रूटीन है या व्हाट यू आर एमिंग फॉर या किस में हो। बट क्रिएटिन बेसिकली आपका परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट रहता है। सो इट्स नॉट अ हेल्थ सप्लीमेंट फॉर योर बॉडी, इट्स अ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। जैसे कैफीन भी होता है, बहुत लोग प्री वर्कआउट्स में कैफीन लेते हैं, तो बट इफ आई टॉक अबाउट दिस क्रिएटिन, सो जो भी जैसे जो हम लोग बहुत स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं, लिफ्टर्स होते हैं, तो ये बेसिकली जब आपका फटीग होता है, जब आप बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हो, लिफ्टिंग करते हो, तो ये आपका वो फटीग का जो है पैरामीटर इन योर बॉडी, उसके अगेंस्ट बफर का काम करता है। इवन आपके जो नेचुरल फूड सोर्सेज है लाइक पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन, मीट एंड ऑल, इनमें भी क्रिएटिन होता है। बट व्हेन वी एक्सटर्नली टेक creatine, okay, recommended is like a scoop जो उसका होता है like 3 grams to 5 grams per day। तो आप कैसे भी ले सकते हो लाइक इन वाटर, और यू कैन मिक्स इन योर ओट मील एंड एनीथिंग यू कैन टेक। तो आपको वो फटीग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो आपका बॉडी बेटर परफॉर्म कर पाती है। ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है क्रिएटिन, और वो थोड़ा बॉडी में वाटर भी होल्ड करता है, तो आप ज्यादा पुश कर पाते हो। लाइक व्हेन वी ट्रेन तो हम लोग को वो एक्स्ट्रा रेप्स चाहिए होते हैं कई बार, राइट? तो वो आपको बस हेल्प करता है जल्दी फटीग आने से जब आप बहुत हाई इंटेंसिटी में ट्रेन करते हो। Got it. And what about BCAA? And is it needed? BCAA is like amino acids only which people take like during their workouts, और इट्स नॉट नीडेड। आपके नॉर्मली जो आप वे प्रोटीन वगैरह भी लेते हो उसमें भी थोड़ा बहुत रहता ही है कंटेंट या वो, तो इट्स नॉट वेरी कंपल्शन। वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। आप अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक, बट ऐसा कुछ उससे एनहांसमेंट नहीं होता परफॉर्मेंस का। Got it. Got it. Okay, so we have Rajiv. Yes, buddy, you can ask a question. Hi Kalyan, how are you? First of all, actually. I'm good, buddy. How are you? Yeah, fine, fine. And I have a question about this proteins. Any like what do you suggest? Like any specific protein brand have you will you suggest to take?
Okay, so I don't talk about a specific brand because since I'm into this field, so I just don't take a particular case, this is good or that is bad. But you can take any. There are like lot of good protein in the market, like Optimum Nutrition On, which I said, Isopure said, My Protein is also good. Then like these are some trusted brands like you have lot. You like GNC is there, so there's no specific. Even I keep on switching based on the month I have a budget and the month I don't have a budget. So even I keep switching between these. तो ऐसा कुछ specific नहीं है. आपको बस ये देखना है कि आप trusted seller से ले रहे हो और दूसरा आपका one scoop में at least 25 to 27 grams of protein आ रहा है. So these things you should see and the amino acids profile कि वो सही है. बाकी आपको कुछ नहीं देखना होता है. You can take as per your budget. कि आप कितना अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो लाइक आइजो प्योर एंड ऑन कम्स ऑन अ हायर रेंज माई प्रोटीन इज लाइक अफोर्डेबल राइट सो देयर आर लॉट्स इन द मार्केट एंड बिकॉज मैं इस फील्ड से नहीं हूँ तो आई कैन आंसर यू राजीव. व्हेन मैं स्टार्टिंग में जब मैंने फिटनेस में स्टार्ट किया था तो व्हेन आई वाज लिफ्टिंग तो अब ऑफ कोर्स ऑन वगैरह बहुत महंगे थे, बहुत ही महंगे थे. तो आई रिसर्च्ड एंड आई फाउंड दिस ब्रांड कॉल्ड एज इट इज, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है एंड पैकेट में आता है. उनका ऐसा बॉटल में नहीं आता, सो इट इज़ मच चीपर. एंड एज इट इज में आपको एक बार कोड भी मिलता है वेर यू कैन वेरीफाई एंड यू कैन फाइंड आउट कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है. मोस्टली ऑथेंटिक होता है बिकॉज द प्राइस रेंज इज वेरी लो, लाइक कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स वेयर वो लोग 4,500 5,000 6,000 में अपना डब्बा बेच रहे हैं. दीज गाइज सेल इट एट 2,700 2,800, सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा डिफरेंस है. एज इट इज का केसिन भी आता है, एज इट इज का वे प्रोटीन भी आता है एंड आई गो फॉर एज इट इज का वे प्रोटीन आइसोलेट which is something around 2,800. It's amazing. And if you want, I can give you the link. DM में कभी भी आप बोल सकते हो. जस्ट गिव इट अ ट्राई, आपको कैसा लगता है. मैंने ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. उसके बाद आई मूव टू डिफरेंट ब्रांड्स बट डिडंट वर्क फॉर मी. मुझे थोड़ा डाइजेशन इशू हो रहा है. तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस वन. आइसोलेट इज वेरी अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन का थिंग. सो compared to concentrated whey protein. So Rajiv, that is something that you can notice. Yeah, that's the thing. So I think we answered your question, Rajiv. Anything else you want to ask? No, thank you. Okay, got it. So, okay, back to this. Ginny, now we have discussed about all the things, but एक चीज जो होता है, अब बहुत लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं and they want to get huge और उनको थोड़ा सा मोटा बनना है, तो वो लोग gainers लेते हैं. Now gainers are a lot of carbohydrates, right? Are you someone who suggests gainers? Because I have not seen a genuine ट्रेनर सजेस्टिंग कि आपको गेनर लेना चाहिए, या फिर गेनर के डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं. डू यू वांट टू से ऑन दिस वन? आई एम नॉट वेरी श्योर बट जस्ट एज यू आर एन एक्सपर्ट, आप कुछ बताना चाहते हो अबाउट द गेनर्स? ओके सो जिन लोग को भी गेन करना है वे देयर इज फर्स्टली नो नीड ऑफ यूजिंग गेनर्स या जिनको लूज भी करना है उनको भी फैट बर्नर्स का जरूरत नहीं होता है आपको बस अपने मेंटेनेंस लाइक द जो कैलोरीज आपका मेंटेन कर रहा है वेट उससे ज्यादा खाना होता है तो जो गेनर्स दे रहे हैं वो ही आपको आपके फूड सोर्सेस भी देंगे ना लाइक प्रोटीन कार्ब्स एंड एवरीथिंग तो आप अपने लाइक आप अगर आपका मेंटेनेंस सपोज 2,500 है you can start with like 2,000 like a 200 surplus calories like you can start eating from 2,700 calories and yes of course you should weight train ताकि आपका वो muscle gain भी हो एंड कुछ लोग स्किनी फैट होते हैं लाइक वो पतले तो दिखते हैं बट उनका मसल मास नहीं होता है दे हैव अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडी तो उनको इवेंचुअली लाइक थोड़े कम सरप्लस रेंज से लाइक ज्यादा ही 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा ना करते हुए धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए करना चाहिए तो एज एंड व्हेन दे वेट ट्रेन या डू एनी फिजिकल एक्टिविटी उनका फैट लॉस भी होगा एंड दे विल इवेंचुअली स्लोली गेन मसल मास ऑल्सो तो वो बहुत जरूरी होता है आपको सरप्लस में खाने के लिए एंड वेट ट्रेनिंग करने से आप अच्छा, बहुत तो बहुत इस खाओगे तो फैट स्टोर करोगे गॉट इट. एंड इस केस में आई मीन व्हाट इज द फूड दैट यू वुड से कि इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू पुट ऑन द वेट करके, लाइक आर बनानास द बेस्ट वन और कुछ और है?
Okay, so there is no food like who will help you lose fat or who will help you gain. Even deficit, maybe I do have bananas. If I'm on a fat loss journey, ऐसा नहीं है मैं नहीं खा सकती. आपको बस क्वांटिटी ज्यादा करनी है. वही मैंने बोला. अगर आप मतलब कुछ लोग को हाँ अगर इफ somebody is having कि वो लोग खा ही नहीं पाते like there are a lot of people out there जिनका appetite उतना होता ही नहीं है. तो if you will ask that person he or she कि आप 3000 कैलोरीज एकदम से खाने लगो तो वो नहीं खा सकते हैं उनका एपिटाइट उतना होता ही नहीं है तो दे ईदर मेक शेक्स आउट ऑफ ओट्स बनानास पीनट बटर एंड ऑल एंड ड्रिंक इट ओके क्योंकि उनको तो 3000 कैलोरीज खानी है ना दिन भर की और दे विल गो फॉर फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इट्स लाइक आप मैदा वैदा खाते हो या पोटैटो या स्टार्ची फूड्स खाते हो तो फास्ट डाइजेस्टिंग होते हैं लाइक ओट्स एंड ऑल स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं क्योंकि अगर आप ओट्स खाते हो तो आपको वो फुल करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए तो ऐसे करके आपको अपने फूड चॉइसेस चूज करने चाहिए लाइक बनानास एंड ऑल थोड़ा ज्यादा ही हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आ सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि आप जब लूज करना चाहते हो तो आपको बनाना स्टॉप ही कर देना इफ यू लाइक इट यू इंक्लूड इट इन योर डाइट गेनिंग में भी सेम होता है आपको वो बस कैलोरीज मेंटेन करनी है इट्स अप टू यू हाउ यू चूज योर फूड सोर्सेज Okay, that makes so much of sense. So we have Abhishek with us. Hi Abhishek brother, आपका क्वेश्चन पूछिए. Kalyan bhai, it's not exactly a question. So one thing I just overheard about that as it is protein, right? So as it is a little more expensive, there's one more I used to use which is Pro Gauge, and they're quite awesome because like they are very less in price, and they're the protein is like really good. Okay, protein powder that is. Is- So is it an American brand or I कैसा है think वो? it's Indian. I'm not sure. I used to order it Okay. from Amazon, and they come at like those 2.5 5 kg 10 kg packages. So you can actually just ask them for like 10 kg packages, and they'll send it to you, and they are quite cheap actually. They're very cheap comparatively. Like I actually went for that 1 gram, like how many like pesa per gram, right? So I just wanted to calculate like what is the cheapest source of protein. So eggs were like basically the cheapest, but they don't taste as amazing, right? But I think this raw protein with this thing that pro gauge is really good. Whey Yeah, yeah. protein. Mm-hmm. And one more thing Okay. was about the gainers, right? Like it's see one more thing that I would add to about gainers is like it's not just about this thing. See, as people who are fat who need to reduce weight, right? We are always like given more benefits in terms of saying that like अरे आप लोगों को तो बहुत मतलब reduce करना है, so you have to control a lot of food and this that and all. The same problem actually is faced by people who are very thin, right? Because I've been thin, I've been fat, then I've become fit. So the gainers are necessary for people who don't have the appetite to eat a lot, right? So in such situations, like it is necessary, but otherwise, like in general, like what Ginny was saying, I think it makes sense that like food you can just eat based on whatever suits your body and like whatever you feel like eating, but you should just keep it in the limits of the calorie. Yeah, that was just my points to Correct. add, though. Yeah, thank you. Thanks Yeah, yeah. Abhishek. Thank you. So we have Rajiv again. Rajiv, go ahead. Your question. Rajiv, you can ask your question. Okay. I think Rajiv is not there, but ठीक है. I'll ask the next question. We were discussing about supplements a lot, and supplements के साथ साथ, of course, the gym part is also very important. There is something called as a progressive overload. So, what exactly is progressive overload, Ginny? If you can break it down for us, and as a beginner, also, what are the best workout for a woman? सो ये मेरे दो क्वेश्चन हैं पहले आपको सो या लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्रेसिव ओवरलोड व्हाट एग्जैक्टली इट इज जिनी Okay, so progressive load is nothing like how much volume you give to your muscle. Volume as in, अब ये तो सबको ही पता होगा बिगनर और नहीं आप जिम जाते हो आप वेट उठाते हो ठीक है आपको कुछ रेपिटेशंस बोले जाते हैं करने को एंड आपका सेट्स होते हैं लाइक ट्रेनर आपको बोलेगा डू 3 सेट्स और डू 4 सेट्स विद दिस मच वेट एंड 10 रेपिटेशंस तो ये सब मिला के आपका एक वॉल्यूम बनता है ठीक है तो आप एक पर्टिकुलर मसल को या आप बॉडी के हर
जितने डिफरेंट है, चेस्ट है, ट्राइसेप्स, ऐसे बहुत सारे मसल होते हैं अगर हम नाम लें, तो आप कितना वॉल्यूम दे रहे हो उनको वर्क करने के लिए, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो वो धीरे धीरे, एंड एज अ बिगनर आई वुड से कि जिनको बिल्कुल ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनको प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ऑल पे एकदम नहीं जाना चाहिए। दे शुड फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग द फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, गेट यूज टू कि उनका बॉडी उस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि एक एक्सरसाइज को करने के लिए आपका बॉडी मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। आप अगर आपको कोई बोले ना नींद में उठा के भी यार आपको स्क्वाट्स मारने हैं, तो आपका मसल माइंड कनेक्शन इतना होना चाहिए कि हाँ आपका बॉडी करेक्ट फॉर्म करे, क्योंकि उससे क्या होता है बिगनर्स को स्पेशली इंजरी चीजें हो जाती हैं। तो उनको एज अ बिगनर यू शुड स्टार्ट विद योर फुल बॉडी एंड स्लोली स्टार्ट इंक्रीजिंग। लाइक अगर आप आज कुछ वर्कआउट कर रहे हो, उसमें आपने आप 3 सेट्स किए, तो आफ्टर 2 वीक्स यू ट्राई कि हाँ अब वो 3 सेट तो बहुत इजीली हो जा रहे हैं 10 रेपिटेशन के साथ, और सपोज आपने 2.5 kg वेट लिया, बट आप 2 हफ्ते बाद ये फील करो कि नहीं मैं ये इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट? तो दिस इज व्हाट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि हाँ 2 हफ्ते बाद वो अब 4 सेट कर पा रहा है इजिली विदाउट फटीग, उतना नहीं आ रहा है उसको कंपेयर टू द फर्स्ट वीक when they started. So this is in normal terms what a progressive overload means and how a beginner should focus. But mainly they should focus on कि हाँ वो जो exercise कर रहा है उसका form समझे, कि वो क्यों कर रहे हैं, किस body part के लिए कर रहा है, और सही से execution कर रहे हैं, यानी तभी वो effective होगा। अदरवाइज आप इंजरी में ही चले जाओगे, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो नहीं हो पाएगा। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। आई होप आई आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस इन दिस। हेलो। Sorry, sorry, Yeah. sorry. Yeah, Ritika, go ahead. Yeah. So this is like a personal question. So a few years back, mostly 2 years back, I had started working out using like YouTube video देख के एक home workout पे. I did not use any kind of equipment. और अभी आफ्टर 2 इयर्स जो जो एक हाइएटस रहा है मेरा, इस बीच में कोई इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई है। एंड देन आई शिफ्ट टू माय यूनिवर्सिटी जहाँ पे जिम है, बट हमारा ट्रेनर नहीं है कोई। एंड अभी जिम में जाके इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग कि कहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर क्या करूँ। लाइक हाउ डू आई इवन बिगिन दिस, बिकॉज मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना होगा, राइट? सो ओके, लाइक या so for you, I would Ritika recommend कि if you have certain fair idea about like exercises, तो you are aware, I'm assuming कि हाँ chest muscles होते हैं, legs muscle होते हैं, abs होते हैं, right? तो you should split your training, like आप try करो कि आप per day जाके सिर्फ 2 muscle group करो, like split, like if you're training 5 days a week, तो ट्राई करो कि आप एक दिन चेस्ट एंड ट्राइसेप्स करो, दूसरे दिन जाके आप लेग्स करो, तीसरे दिन जाके आप बैक बाइसेप करो, एंड फोर्थ डे जाके आप शोल्डर करो और एब्स करो। तो दीज आर द मेजर मसल ग्रुप। अब आप एक्सरसाइजेस की बात करोगे तो मैं बोलूँगी हर मसल ग्रुप के लिए व्हाट यू नो फॉर नाउ, जिसका फॉर्म आपको लगता है कि हाँ आपने 2 साल पहले भी सीखा था, यू रिमेम्बर इट वेल, कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अगर चेस्ट की बात की जाए तो आप चेस्ट प्रेस करते हो, देन यू हैव पेग फ्लाई मशीन इन द जिम विच यू कैन डू इट। ओके, आप पुशअप्स कर सकते हो। अगर आप पुशअप्स नहीं आते तो इवेंचुअली यू कैन स्टार्ट विद नी पुशअप्स, कि आप नी के सपोर्ट से आप पुशअप्स कर सकते हो। तो दीज 2-3 एक्सरसाइजेस सेम फॉर ट्राइसेप इन एवरी मसल ग्रुप जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू कीप दोज 2 to 3 एक्सरसाइजेस पर डे पर मसल ग्रुप आपके प्लान में, और आप यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, आप उसी में आप ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस सिर्फ, क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग प्लान लास्ट 6 से 8 महीने से एक ही है। आई जस्ट वर्क कि हाँ मैं बस प्रोग्रेस करूँ, कि अगर मैं आज इतने वेट उठा पा रही हूँ तो नेक्स्ट डे आई ट्राई कि उतने वेट पे ज़्यादा रेपिटेशन, तो आप 3 से 4 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको इंजरी भी नहीं हो, तो आप वैसे आप अभी के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा जिनी, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे रितिका को भी बहुत हेल्प करेगा इन अ टर्म्स की, अगर एक वुमेन है जिनको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज, तो वो वेट ट्रेनिंग के लिए
ब्रेक डाउन अगर आप कर सकते हो कि मंडे को चेस्ट करना चाहिए और चेस्ट में ये एक्सरसाइज करना चाहिए, ट्यूसडे को ये लेग करना चाहिए और लेग में ये एक्सरसाइज करना चाहिए, तो दैट विल बी अमेजिंग, लाइक दिस इज गोना बी सुपर यूजफुल। ओके, सो जैसे मैं रितिका को बता रही थी कि चेस्ट में लाइक एज अ बिगनर या आप अगर बहुत ज़्यादा एडवांस इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं हो, तो आप जैसे मंडे को जाके यू डू चेस्ट, ट्राइसेप्स और एब्स, ठीक है। तो आप चेस्ट में क्या कर सकते हो, फ्लैट बेंच पे आपके पास दो डंबल्स होंगे, यू कैन डू फ्लैट बेंच प्रेस, ओके। आप पेक फ्लाई मशीन कर सकते हो जो हर जिम में होगी। पुशअप्स डेफिनेटली यू शुड इन्वॉल्व, क्योंकि उसके लिए आपको कोई वेट की जरूरत नहीं पड़ रही है या इक्विपमेंट की। दैट इज वन ऑफ द गुड चेस्ट लाइक अपर बॉडी वर्कआउट, ठीक है। उसमें आपके शोल्डर भी टारगेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद चौथा एक्सरसाइज, यू कैन गो इंक्लाइन, बेंच को आप इंक्लाइन कर दो, फिर आप डंबल प्रेस कर रहे हो, यू कैन कीप लाइक अराउंड 60 डिग्री इंक्लाइन, या अगर आपका फिक्स्ड है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, उतना तो कोई भी आपको हेल्प करेगा, नहीं तो 60 डिग्रीज पे यू कैन कीप। देन देर इज अ डिक्लाइन बेंच। तो दीज 4-5 एक्सरसाइजेस फॉर चेस्ट यू कैन कीप। देन हम ट्राइसेप की बात करें तो ट्राइसेप में क्या आ जाएगा आपका, पुश डाउन, लाइक आप केबल लो एक मशीन पे जो लगी रहती है, आप ऊपर से नीचे, लाइक ट्राइसेप पुश डाउन वर्कआउट यू कैन डू। देन दूसरा आप बेंच पे लेट के एक हाथ से ट्राइसेप कर सकते हो, लाइक अभी मुझे नहीं पता हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट एक्सरसाइजेस, बट लाइक skull crusher is in, with dumbbell you can do a skull crusher for your triceps. Then like tricep extensions you can do with dumbbells. तो these 2-3 exercises, क्योंकि tricep small muscle group होता है, तो वो वैसे भी चेस्ट के साथ कहीं ना कहीं या कोई और वर्कआउट में ट्रेन हो ही जाएगा, तो आप 2 to 3 ये एक्सरसाइजेस रख सकते हो। फिर सपोज ट्यूसडे जाके आपने लेग्स किए, तो लेग्स में क्या मेजर मूवमेंट्स होते हैं, स्क्वाट्स। अभी आप बिगनर हो तो आप पहले बॉडी वेट्स के साथ स्क्वाट्स, पहले आप फॉर्म सीख जाओ, वो आप कर सकते हो। देन स्लोली स्टार्ट एडिंग वेट्स, लाइक डंबल्स यूज कर सकते हो, इफ यू गेट कंफर्टेबल विद डंबल्स आप बारबल, एम्प्टी बारबल से स्टार्ट कर सकते हो। देन या आप ऐसे प्रोग्रेस करोगे, देन आपके पास लेग प्रेस मशीन होती ही है हर जिम में मोस्टली, आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लेग एक्सटेंशन मशीन बैठ के करने वाली होती है, वो कर सकते हो। देन फॉर हैमस्ट्रिंग्स लेग कर्ल मशीन होती है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस तो एटलीस्ट आप एज बिगनर लेग डे पे आप इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर हम आते हैं एब्स पे। तो उसमें आप बेसिक क्रंचेस कर सकते हो, हाफ एंड लाइक सिटअप्स व्हाट यू से, ओके। प्लैंक होल्ड्स आप कर सकते हो, आप स्टार्ट करके आप 10-10 सेकेंड होल्ड करो, फिर इवेंचुअली वो भी आपके कोर पे या फुल बॉडी पे भी वर्क करता है। देन बैक बाइसेप में डेडलिफ्ट्स यू कैन स्टार्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म विद द डंबल्स, एंड वो कंपाउंड मूवमेंट्स जो आपके सब मतलब मल्टीपल मसल ग्रुप पे वर्क करते हैं, इसलिए वो होता है। उसके बाद आप बैक में लैट पुल डाउन मशीन कर सकते हो। देन व्हाट यू हैव डंबल्स, तो आप बेंट ओवर रोज कर सकते हो बैक में, ठीक है। बाइसेप के लिए आप बाइसेप कर्ल कर सकते हो विद रॉड और विद डंबल्स और विद रोप ऑल्सो। प्रीचर कर्ल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स होते हैं, हैमर कर्ल्स होते हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेस है जो सबको ऑलमोस्ट नॉलेज होती है हु आर स्टार्टिंग विद द वर्कआउट्स। ग्रेट। तो मेरा जो क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड था, लाइक अभी जैसे आपने बोला कि ऐप के वर्कआउट्स होते हैं, तो इज इट समथिंग दैट यू शुड फोकस अ लॉट ऑन, या फिर यू शुड concentrate on losing weight and you know and rather not focusing on apps altogether, या फिर आपको apps भी वर्कआउट करना चाहिए? ओके, सो लाइक एनी अदर मसल ग्रुप, एब्स भी एक मसल ही होता है जिसको आपको ट्रेन करना जरूरी होता है, कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जिसके एब्स दिख रहे हैं दैट डजंट मीन कि उसका कोर बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अनलाइक एनी अदर मसल, जितना आप उसको ट्रेन करोगे आप उसके उतने ही स्ट्रांग होंगे। तो लाइक आई फोकस कि एटलीस्ट थ्री थ्री टाइम्स अ वीक आई एम ट्रेनिंग, बट मेरा कंपाउंड मूवमेंट्स अगर मैं बात करूँ लाइक स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स, बेसिकली वो इतना लाइक हैवी होता है कि वो समवेयर और द अदर दे टारगेट माई कोर, वो मेरे कोर पे वर्क करते ही हैं।
For people who are not lifting so heavy, they can like do daily also, but आपको उनको ट्रेन करने एक ऑप्टिमल रेंज में जरूरी होता है कि हाँ आप पर वीक एटलीस्ट एप्स के 10 to 12 सेट्स ओवरऑल कर रहे हैं, मतलब हर दिन अगर आप 3 3 सेट भी कर रहे हैं, 4 4 सेट भी कर रहे हैं, तो वीक में एटलीस्ट आप 10 to 12 सेट्स तो हिट कर ही रहे हैं ना एप्स के लिए, तो उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेंथनिंग के लिए या मसल्स के लिए। बाकी फैट परसेंटेज जिन जैसे जैसे लो होता जाता है वैसे वैसे आप सबके पास एब्स होते हैं, बट वो विजिबल होने लगते हैं। Amazing. We have Palak. She have raised her hand. Palak, पूछो आप अपना question. Yeah, hi Kalyan, hi Shruti, hi Jini. So I have this very personal question. Like Jini, I have PCOD, and like what happens in PCOD that people gain their weight, but in my case, it is like something of reverse PCOD in which I am losing out my weight. Once upon a time, I used to wear 29 waist, and now I have came to like 27, and I am 5'8" in height, but my weight is 53, so I'm underweight. So one of my friend or colleague suggested me to start weight training so that I can gain my weight and not excessive weight because of PCOD. But the thing is, where I live, it is a very small town. I don't have any trainer. So how shall I start, or will weight training help me in this? Okay, so obviously weight training will help you, या overall keeping yourself healthy also will help you, क्योंकि पीसीओडी कुछ नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रहता है। आपका लाइफस्टाइल उतना हेल्दी नहीं होता, तो आपको उसको ट्रैक पे लाना होता है, विच इज हिंडरिंग यू फ्रॉम लूजिंग वेट। अगर आप न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी रख लो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाके ही ट्रेन करना है गाइस, आप घर पे भी ट्रेन कर सकते हो। यू हैव योर लाइक बॉडी, ओके, यू कैन यूज दैट। ठीक है, आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं तो यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक लाइक स्क्वाट्स, ओके, वो आपके बॉडी वेट से हो जाते हैं। पुशअप्स, इफ यू कैन डू पुलअप्स और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, सो वो थोड़ा हैवी हो गया, बट यू कैन डू लाइक नॉर्मल बॉडी लाइक बर्पीज एंड ऑल। तो आप ऐसे सर्किट से भी स्लोली स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। नो नीड कि आपको जिम में ही जाना है वेट लूज करने के लिए या वेट गेन करने के लिए। इट्स लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। बॉडी से भी आपका वेट ट्रेनिंग होता है, क्योंकि आपका बॉडी में भी तो कुछ वेट होल्ड होता है, राइट? तो आप बॉडी वेट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं ट्रेन कर सकते या यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट एक्सरसाइजेस एंड यू आर अफ्रेड कि मेरा फॉर्म गलत नहीं हो जाए, स्टार्ट विद द रेजिस्टेंस बैंड्स एंड बॉडी वेट्स एट होम, easily you can do. Okay, so I do yoga. So shall I combine this of the exercises with it? Yes, definitely. It's great that you do yoga, because उससे आपका क्या overall not even health but mentally भी you calm yourself and you can like do better. Even I do practice like Surya Namaskars and all. I have started like since last year. I'm not a yoga person, but हाँ, that has helped me a lot with the flexibility when it comes to yoga में। और ऑब्वियसली वो वेट लॉस में तो हेल्प करता ही है, क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो है ही ना के नहीं से बेटर, तो यू कैन कंबाइन विद दैट। Yes, I understood that, but I am not facing the problem with the weight gain. I am facing that I'm losing out my weight without doing nothing. Like I have changed my diet, probably I changed something like I'm eating healthy these days, but I'm doing yoga since around 2 years. But all of a sudden, I am losing out much weight. So I am not a doctor, या आई डोंट नो एज अ पर्सन कि आपका पूरा डाइट रूटीन या आपका आप क्या खा रहे हो हेल्दी में भी मुझे नहीं पता, बट फॉर श्योर इट इज़ नॉट सफाइसिंग योर बॉडी नीड्स, इसीलिए वो वेट लॉस रैपिडली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट कैन भी कि आपका आपका मसल लॉस भी हो सकता है, राइट? आप फैट नहीं लूज कर रहे हो, आप मसल लॉस कर रहे हो, आप शायद एग्रेसिव हेल्दी खाने की कोशिश करो कि मैंने ये कट डाउन कर दिया, वो कट डाउन कर दिया, एंड यू आर नॉट ऑप्टिमली ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपकी सब चीज़ का। एवरी थिंग लाइक every macronutrients, everything plays a role, plus your like physical activity also plays a role, कि आपका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है। तो मुझे पता नहीं है कि आप क्या एग्जैक्टली आपका रूटीन है, तो आई कैन नॉट से कि आप ये गलत कर रहे हो या यही करो, बट या यू हैव टू फिक्स इट समवेयर, or you can hire a coach who can guide you through this.
who knows your lifestyle or whom you can connect on one-on-one basis. Right, Okay, right. okay. So, Thank you, Ginny. I actually understand the thing. This may be the reason that I am not balancing everything out correctly. या मे बी आपने हेल्दी खाना शुरू किया है बट आपने बहुत ज्यादा कट डाउन कर दिया है। आप बहुत ही ज्यादा लाइक कम खा रहे होगे आपकी बॉडी नीड्स से, तो दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। Okay, thank also, I you. want to ask Palak, like, Palak, have you visited a doctor for this thing? Yes, yes, I am taking homeopathy treatment, and the doctor suggested me some sort of yoga. Although I was doing since 2 years, but the doctor specifically suggested me some poses to do, and he himself has given me some diet schedule. Mm-hmm. But I am really confused that if I am doing it correctly or not. So, planning to have one-to-one session for yoga with someone. ओके। Okay. Even when I was diagnosed with PCOS back, so even my gynecologist told me, मतलब I didn't undergo any medications, homeopathic or no medications. She just told me one thing कि आप अपना lifestyle change करो, आप अपना weight lose करो, like एक range में रखो, तो eventually ये अपने आप ही reverse होने लगता है। And मेरे को ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा symptoms थे भी नहीं, except for some spotting and all, like between your periods। तो ऐसा तो मुझे सो फार सो मेनी इयर्स मुझे अब कुछ भी ऐसा सिम्टम्स तो नहीं लगता है विद द So, चेंजेस आई मेड टू माई सेल्फ। Ginny, so have you reversed it now? Like, you या are फॉर मी इट्स completely रिवर्स्ड। reversing? लाइक Okay, मुझे अब amazing. जो बेसिक सिम्टम भी आई वॉज डायग्नोज दैट टाइम, अब मुझे वो भी नहीं है। लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल विद मी। Okay, amazing. We will go to Rajiv and Avijit next, but I want to ask something while we are on this topic. So, Ginny, a lot of people, a lot of females go through this thing like PCOS or PCOD, but like I talk to a lot of my friends and then a lot of like people who are in my contact, but they are not aware of the reason, like why it happened. Like you mentioned, it might be because of the poor lifestyle. That can be a thing. And again, like, can you please share a few tips or suggestions, something that we can follow so that we don't get into this thing, so we can avoid having PCOS or PCOD? सो यू कैन नॉट अवॉइड हैविंग पीसीओडी और पीसीओएस, क्योंकि आज की डेट में लाइफस्टाइल ही वैसा। यू कैन इम्प्रोवाइज योर लाइफस्टाइल, यू कैन हैव अ हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। when I talk about balanced nutrition, it involves everything. Like you have good amount of carbs, protein, fats, apart from that fruits, veggies, okay, and you do a good amount of physical activity and you keep yourself healthy, like you keep your like थिंग्स इन चेक, लाइक ओवरऑल हेल्थ, तो वो आपका अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है, या रिस्क पीसीओडी पीसीओएस होने का वो अपने आप ही कम हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि देयर इज अ शॉर्ट रूल कि आप ये करोगे तो वो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिससे बहुत लोग को डायबिटीज वगैरह होता है, बहुत लोग को हेरिडिटरी होता है डायबिटीज। Mhm. वो लोग लेके नहीं आते, दे कैन जस्ट कंट्रोल दैट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग कि हाँ वो उनको आ गया है, उन्हें तो कुछ किया नहीं ना, उनके तो हेरिडिटरी में था। सेम इज योर पीसीओडी पीसीओएस, यू कैन जस्ट control it, or you can just reduce or reverse it, the effects which it has on women with the healthy lifestyle. So basically, like leading a good lifestyle, balancing everything in our day-to-day lives is Yes, the best yes. thing here to avoid. मतलब to avoid क्या मतलब to keep things in balance in our life. So next question, Rajiv might be having. Yeah, Rajiv, please go ahead. Yeah, Ginny, I have a doubt actually. Is that necessary if we are doing gym to take a protein? Without doing gym, we can also take protein or not? That is my. यस वी कैन। बेसिकली आपको वे प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन होता है आपको अपना डेली इनटेक पूरा करने के लिए होता है। अब लोग इसलिए उसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि अगर आप इंडियन का जनरल फूड डाइट देखो जो इंडिया में फॉलो होता है, हम लोग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हम इनटेक करते हैं, हम प्रोटीन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम या फूड सोर्सेज से कंप्लीट नहीं कर पाते अगर वेजिटेरियंस स्पेशली, तो हम इतना ध्यान ही नहीं देते कि हमें वो करना है। तो हाँ, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट यू शुड टेक प्रोटीन, यू कैन टेक प्रोटीन अगर आप फूड सोर्सेज से नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ले सकते, कि सिर्फ जिम वालों को ही लेना है।
And what is the trusted brand like? Actually, Ginny, what is the like? How can we like take one protein? ये अच्छा है. Like we can trust that one. Like any suggestion on that? तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में कवर किया है. आई नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिक ब्रांड. इवन कल्याण शेयर्ड हिज लाइक एक्सपीरियंस विद द प्रोटीन. तो आपको सिर्फ अपने बजट और वो ऑथेंटिक है एंड इट्स सर्विंग योर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन विद ऑल द प्रोफाइल वेल प्रोफाइल विच अ प्रोटीन शुड हैव, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो. आई विल नॉट टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड लाइक दिस इज बैड और दैट इज बैड. ये मैंने ऑलरेडी लाइक कवर किया है स्टार्ट में. Yeah, 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 yeah. Thank you, मोस्टली thank. राजीव, आई थिंक जो भी ब्रांड आप खरीदते हो ना, तो अगर आपने कोई जेन्युइन वेबसाइट से खरीदा है तो उसके साथ सर्टिफिकेशन आता है, तो आपको पता अच्छा, चल ठीक जाता है. है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है. रैदर, और Okay, okay. अपने ब्रांड्स के खुद के कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं टू नो कि वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट. जैसे मैंने आपको एज इट इज का बताया, यू हैव Yes, टू yes. स्कैन इट. Actually, that one is my यस, question. एग्जैक्टली. तो वही वो चीज से आपको फिगर आउट हो जाएगा. जो भी ब्रांड आप लेने वाले हो ना, उसके ऊपर एक थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस आपको पक्का मिल जाएंगे. वो देखो, एक बार समझने की कोशिश करो, एंड देन उसी सोर्स से खरीदो. लाइक न्यूट्राबे नाम है शायद से उस वेबसाइट का. आपको अच्छा प्रोटीन के सब मिल जाएंगे, या कोई भी सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे. सो दैट इज योर आंसर. या. Yeah. Thank you, Kalyan, and thank you, Jenny. थैंक हेलो यू राजीव. सो अभिजीत इज देयर. अभिजीत, आप अपना हेलो क्वेश्चन पूछ लो. हाँ जी अभिजीत. हेलो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी. मुझे वेट पुट ऑन करना था, तो मुझे ये जानकारी चाहिए थी. मेरा डेस्क जॉब है, ठीक है. तो मेरा डेस्क जॉब कंप्यूटर में बैठे रहना होता है, तो उससे क्या कैलोरीज बर्न होता है? क्योंकि मुझे जानना था. मैं अगर 3000 कैलोरी पर डे खाता हूँ, ठीक है, और मेरा डेस्क जॉब से कितना कैलोरीज बर्न होता है, मुझे ये जानना था. क्योंकि मुझे वॉकिंग, मैं 30 मिनट वॉकिंग करता हूँ और साइकिलिंग भी करता हूँ. उससे मेरा 500 कैलोरी बर्न हो जाता है डेली. तो मुझे जानना था ये एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा. मतलब अगर मैं साइकिलिंग और वॉकिंग ना करूँ और डेस्क जॉब से ही मैं 2000, मतलब मेरा डे टू डे एक्टिविटी में 2000 कैलोरी बर्न होता है या नहीं. तो जो आपका क्वेश्चन है, आपका डेस्क जॉब है, मेरा भी डेस्क जॉब है. ठीक है, आप सिटिंग या इस सब से भी कैलोरीज बर्न होता है, चलने से भी कैलोरीज बर्न होता है, बट इतना नहीं होता है जितना बाकी फिजिकल एक्टिविटीज से हो सकता है. आप गूगल जाओगे तो आपको एक चार्ट भी मिलेगा कि हाँ इतनी चीज अप्रोक्स कितना कैलोरीज बर्न करती है. अगर आप 2000 आप बोल रहे हो आप कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका बॉडी वेट मेंटेन रहता है सपोज 1500 कैलोरीज पे, तो आप 500 कैलोरीज वैसे भी ज्यादा खा रहे हो, जिसमें से आप बैठ के अगर आपने 100 कैलोरी भी चल के सब 100 कैलोरी भी बर्न कर लिया, तो भी आपने 400 कैलोरी दिन भर का एक्स्ट्रा ही खाया है. तो आपको कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करना ही पड़ेगा. सिर्फ हाँ, बैठे बैठे खा के तो नहीं बर्न हो सकता ना. नहीं, मेरा एक डाउट था. मतलब एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ. मैंने किसी से पूछा था, उसने बताया था मेरा डेस्क जॉब जो होता है, मेरा डे टू डे एक्टिविटी जो होता है, मतलब ऑफिस में, उसमें से ही बोलते 2000 कैलोरी बर्न हो जाता है, ठीक है. अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लाओगे, मतलब जिम जाओगे या ट्रेनिंग करोगे, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बर्न होगा. तो मुझे ये जानना था, ये अगर 2000 कैलोरी अगर बर्न होता है ऑफिस वर्क में, तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब वो फैक्ट है या मिथ है? वही जानना था. ये नहीं, ये फैक्ट नहीं. जिसने भी आपको दिया है ये इंफॉर्मेशन वो गलत है. सिर्फ बैठे रहने से ज्यादा 100-150 कैलोरी बर्न हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा अभी मूविंग हो. उससे ज्यादा तो नहीं बर्न होगा. इतना तो रनिंग में भी लोगों का 2-2 हजार कैलोरी बर्न नहीं होता है. तो वो तो मतलब मैं इंफॉर्मेशन गलत है. ओके, पूरा इसमें गलत है. हाँ, पूरा गलत है. बट टू सम एक्सटेंट मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ. लाइक आई हैव सीन एंड आई हैव नोटिस्ड, जब भी आप ओवर वेट होते हो, एंड व्हेन यू डू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज,
आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो कंपेयर टू द वन पर्सन जो ज्यादा फिट है आपसे. तो Yes. what is happening here is you're basically आपने ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन किया, आपने ज़्यादा फैट बर्न आउट किया, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्लो है. तो अगर आपकी वो फास्ट है, तो जिनी इफ यू वांट टू एलाबरेट ऑन दिस थिंग कि मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है, तो दैट वुड बी अमेजिंग, राइट? ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज, ऐसा नहीं है कि किसी का फास्ट होता है या स्लो होता है. बेसिकली आप जितना ज़्यादा मूव करते हो उतना ज़्यादा आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है, उस हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है. ठीक है, आप जब जितना ओबीस होते हैं, जितना ज़्यादा फैट होता है, अगर मैं 1 घंटे साइकिलिंग करूंगी तो मेरा उतना कैलोरीज बर्न नहीं होगा जितना एक 90 kg के उसका होगा. तो डेफिनेटली ये सब डिफरेंस आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस हो जाएगा कि हाँ 1000-2000 कैलोरीज का डिफरेंस आ जा रहा है. इट्स मेरली 100-200, मैक्स टू मैक्स 300 कैलोरी. अगर मैं 150-200 कैलोरी 1 घंटे साइकिलिंग सेशन में बर्न कर रही हूँ, तो शायद जो थोड़ा हैवी वेट होगा वो 500-600 कैलोरीज कर रहा होगा टोटल. तो इतना ज्यादा कुछ इतना मेजर डिफरेंस तब भी नहीं होता है जितना वो ये सर बोल रहे हैं. करेक्ट. एंड प्लस एक चीज जो नोटिस हुआ है, एंड कार्डियोज में कैसा होता है, आपने एक्सरसाइज किया उस टाइम पे आपने जितना वेट लॉस करना है, वो होता है, कैलोरीज बर्न होता है जो भी है. बट व्हेन इट कम्स टू वेट ट्रेनिंग, अगर आपने कोई वेट उठाया है एंड आपने उस मसल को फटीग किया है, तो ओवर द टाइम आपको पूरे दिन में आपको वो पता चलता रहता है, एंड वो इस तरीके से आपको इन अ वे आपकी कैलोरीज लॉस होती है. ऑफ कोर्स वो कम होती है कंपेयर टू आप जब कर रहे हो उससे कम होती है. बट जिनी, एम आई राइट इन सेइंग दिस? ओके, सो जब आप कार्डियो करते हो तो हाँ आप उस टाइम बर्न करते हो, बट जब आप वेट ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, जिम में वेट्स उठा रहे हो, तो आपका मसल ब्रेक डाउन भी होता है, मसल बिल्ड भी होता है. तो जब आप रेस्ट मोड में होते हो जिम करने के बाद, तो आपका बेसिकली जो भी मसल ब्रेक डाउन है वो रिपेयर होता है. और जितना ज्यादा मसल मास होगा आपकी बॉडी में उतना फैट बर्न होता है. तो इवन आप रेस्ट स्टेट में भी हो, तो जिम का आपने 1 घंटे का सेशन किया, बट आपने जो मसल बिल्ड किया, अगर आपने ज्यादा धीरे धीरे बिल्ड करते हो तो वो बाद तक भी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस चलता है बॉडी में उसका. तो ये होता है कि जितना मसल मास होगा उतना फैट ऑब्वियसली कम होगा. फैट बर्निंग इवन रेस्ट स्टेट में भी होता है, इवन सोने से भी, स्लीप से भी आपका कैलोरीज बर्न होता है कुछ अमाउंट. तो इसलिए रेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, आपके रूटीन में बहुत, कि हाँ मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ स्लीप लेना ही चाहिए एक बंदे को. एंड अभिषेक, अगर हाँ, आप, अभिजीत सॉरी, आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपना जो आप खाते हो आप उसको कम कर सकते हो, सो दैट इवेंचुअली यू बैलेंस आउट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट. कल्याण भाई सुनिए जी. सुनिए, एक मिनट, एक सेकंड, एक मतलब मुझे थोड़ा ये जानना था, मतलब साइकिलिंग में आधा घंटा करता हूँ, तो उससे मेरा कितना बर्न होता है कैलोरी? ये मैं डेली डेली कर सकता हूँ, मतलब साइकिलिंग आधा हाँ, घंटा 1 घंटा? तो आप अपना वेट डालोगे तो आपको पता चलेगा आपका वेट और हाइट के हिसाब से आप कितना लूज कर रहे हो, बिकॉज यहाँ से हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि इतना रेंज है. वो रेंज में ही बता सकते हैं, हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हमको आपका वेट नहीं पता, राइट? मेरा वेट मैं बताओ क्या, अभी 52 है और मेरा हाइट है 5'8". ओके, मगर अभी भी मुझे गूगल लगेगा. बट ठीक तो है. आप अपना गूगल में जाके आप ये भी देख सकते हो कि क्या, जब आप साइकिल करो तो इतने पर मिनट में साइकिलिंग कितना कैलोरीज बर्न करता है, तो आपके वेट और हाइट के हिसाब से कितना बर्न हो रहा होगा एवरेज अप्रोक्स. वो आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं देगा, अप्रोक्स दे देगा. तो आप गूगल पे जाके अभी टाइप करके सर्च खुद भी कर सकते हो और ओके ओके, कैलकुलेट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके थैंक यू. Great. So, Neha, yeah, go ahead. You can ask your question. Hi, Jini. Hi, Kalyan. So actually, I wanted to ask that it's been a long time. My lifestyle has become very, lazy and sluggish feel होता है मुझे. मतलब I just feel like lying all the time, lying down all the time, and like all doing all the stuff that does not involve, body movement or activity much. So I feel very unhealthy, like also physically and mentally also in some way. So I just want to change that.
So what, Okay. how, yeah. सो फॉर यू सी आपका अगर हेल्थ सही नहीं होता है तो डेफिनेटली आपका मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग भी अफेक्ट होता है, तो आपको Mhm. एक हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मन करता है तो फर्स्ट स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं कि इफ़ आई एम एन एथलीट तो मेरे पास ऐसे डेज नहीं होते कि कभी मुझे मूव करने का मन नहीं होता। बट फॉर यू आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट बाय दिस, कि जैसे आप उठ रहे हो, ठीक है, डू अ 5 मिनट्स 10 मिनट्स वॉक, या आप खाना खा रहे हो उसके बाद डू अ 5-10 मिनट्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इफ यू कैन, तो वो आपको मेंटली भी काम डाउन करेगा। तो लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली, या कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है, भले ही वो आपको अभी फिलहाल के लिए बैठ के करने अच्छा लगता है, लाइक पेंटिंग और रीडिंग, स्टार्ट विद दैट। थोड़ा थोड़ा चलो, तो ऐसे आप कर करके आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो मोर चीज़ें व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि एक थोड़ा आप 10 मिनट्स वॉक भी कर लेते हो तो यू मेंटली फील गुड, राइट? तो आप Yeah, ऐसे you're स्टार्ट right. कर सकते हो। Okay, okay, okay. I'll try that. Thank you. थैंक यू नेहा फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सो Yeah, अभी ना thanks. एक क्विक हम फन वाला एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे विद जिनी एंड विद श्रुति एज वेल, एंड वी विल आल्सो ऐड पलक। सो या नेहा, यू वांट टू आस्क समथिंग? Oh, sorry, sorry, that was by mistake. ओके, नो इश्यूज। सो पलक, इफ यू वांट टू प्ले, बट नहीं, हम पूछेंगे नहीं पलक से, हम डायरेक्ट इंक्लूड कर लेंगे पलक को। तो पलक, जिनी एंड श्रुति, हम इन तीनों से रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन खेलेंगे। तो आर यू गाइज रेडी? यस। Okay, it has to be fast. So it will be Ginny, Shruti, and Palak. ठीक है? तो let's go ओके। with the first question कि favorite fitness product you cannot live without. एग्स। Ginny, eggs. नहीं, product ही है, eggs क्या होता है? प्रोडक्ट ही तो हुआ ना, मतलब खाना ही नहीं, हुआ। food नहीं, खाने का नहीं, टेक्निकल प्रोडक्ट, कुछ कुछ गैजेट टाइप्स। Yoga mat, फोन। probably. ओके, माय पलक से बोल। वॉच, माय फिटबिट वॉच। ठीक है, श्रुति, यू? सेम ओके, वॉच। ओके, कूल। देन एंड सेम नहीं चलेगा, ठीक है? यू हैव टू गेट अ आंसर फॉर दैट। चलो नेक्स्ट What क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। pattern? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। फेवरेट स्पोर्ट दैट इज आल्सो एन ऑल्टरनेटिव फॉर कार्डियो। ओके, स्टार्टिंग विद जिनी, सॉरी, योर फेवरेट, फेवरेट आई कांट हियर यू। फेवरेट sport which is also an alternative to cardio for you most days. ओके, जंप स्क्वाट्स। Okay, Palak? I don't know about cardio, but I play badminton. ठीक है, श्रुति? So for cardio, I play badminton and I do running, then cycling. These three नहीं, things. अरे फेवरेट एक बताना है श्रुति, एक अच्छा, एक ही, एक। हाँ, तो बैडमिंटन यार। Today also I played badminton for 2 hours. I love badminton. बट टीच तुम्हारे में तो यार दोस्त नहीं है ना बैडमिंटन। श्रुति, तुम कहाँ खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो तुम? क्या? तुम्हारे तो दोस्त नहीं है ना, तुम कहाँ खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे अरे, हो? so there, okay, okay. So मेरी सोसाइटी में ना there is all these courts like badminton court, tennis court, billiards, then golf, then everything is there. So today, मतलब there is this slots where people are there जिनको भी खेलना होता है they can come, and then जैसे कुछ लोग ऐसे ग्रुप्स में आते हैं, कुछ लोग ऐसे सोलो आते हैं, तो ऐसे फिर वो खेलते खेलते ना ऐसे हमारा सर्कल बन गया है, so I can just go and play. So I started like last week only because earlier than that I was not able to. I was only like focusing on gym and swimming. So now I am like slowly getting into TT and badminton also. That's great. So next question is favorite healthy food. Favorite healthy food, let's go with Ginny. Ginny, Ginny का कुछ तो इश्यूज है। इश्यूज, Ginny को mic देना है देखो। या आई हैव गिवन अ माइक बट ठीक है, लेट्स गो टू पलक, मैंने उसको भेजा तो है। I like that I eat oats, so I like it. I guess healthy though I like. ओके, श्रुति? For me, it is like quinoa and saute veggies because that is something I eat every day. Kalyan, mine is egg Kalyan. ओके, ग्रेट। सो लेट्स जस्ट वेट। जिनी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा, एक बार वापस एक्सेप्ट करो स्पीकर का। there's some issue with Ginny. Ginny, why don't you like leave and then join again? I think there is some problem because I am also not able to accept you
accept your request. I think I accepted. Better? Yeah. Jini? Yeah, she have the microphone. Yeah. Jini, so can you hear us? मैं सुन तो Yes, सकती हो yes, बोल yes, सकती yes. Now, I was not getting the mic access. So for me, it's eggs. Okay, cool. So next question is favorite dessert. ठीक है? Pan Starting with Jini. pancakes all time. Okay. Shruti? Yeah, I love gajar ka halwa that you cooked few days back, and then pancakes, something which I'm very crazy about. Okay. Palak? I'm very fond of brownies and cakes. I love chocolate cakes and brownies way too much. I can tell Hmm, you a very good recipe in your healthy diet for cake. मुझे भी बताना यार. Yeah. Please, please. Please. Okay. राजीव आप भी बता दो भाई आपका favorite dessert. Spinach burger. Spinach burger? Okay. Yeah, yeah. Peanut Dessert? burger, I guess. Yes, how can it be a dessert? He's saying No, peanut no, sorry, burger. sorry. Peanut burger क्या होता है? No, 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 sorry, sorry. It's sorry. Dessert. Dessert means like I love chocolate cake. Okay. Okay. Yeah. Got it. ठीक है. एक question थोड़ा like when you get up in the morning पहला 60 से 90 minutes आपका कैसा होता है typically? तो let's start with Ginny. I Like how does stretch. your 60 90? I Okay. stretch. 60 से 90 minutes तक. Yes, I do normal because then I can't get into my senses. तो this is kind of a yoga for you या फिर it's just purely stretching? Either I just stretch it normally or I do like 10 Surya Namaskars. Okay. 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 Got it. And do you incorporate meditation as well? I am trying, but I am not able to achieve. That's my 2023 goal to have that. Got it. Okay. Now Palak. Yeah. 60 to 90 minutes. I actually study after waking up just. After Okay. that, I do yoga and whatever working out thing. Okay. ठीक है श्रुति. I stretch for like 10 minutes only, and then I go to kitchen because my cook come at the same time, and then I have to tell her what to do, what to cook, and everything. So that is how my 60 to 90 minutes go. Yeah, I forgot one thing, which is like not a miss. I do have my black coffee along with the stretching routine. I cannot miss that. Great. Amazing. So next question is who is your hero? Like for Ginny. Shahid Kapoor, if you talk about actor, ऐसे कोई hero है नहीं. Okay. Okay. And when I say hero, it's just not hero, but it could be your role model as well. So is it No, Shahid Kapoor? I don't follow role model. I just get inspiration from a lot of people. Hmm. तो Got it. आप बहुत चीजों से बहुत लोगों से बहुत अलग अलग चीजें लर्न कर सकते हो या इंस्पायर हो सकते हो विच आई वांट टू इनकॉर्पोरेट पर्सनली. तो आई जस्ट डू दैट. ऐसा कुछ कोई रोल मॉडल नहीं कि इसकी तरह बनना है या उसकी तरह ही करना है. जिनी आपने मुझसे कुछ सीखा है? हाँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ. हाउ टू be socially active on Twitter, like be a boss of Okay. social media. Cool. So yeah, Palak, who is your hero? Like Actually, your. I also don't have any particular role model or hero. Mm-hmm. Just like Ginny, I guess I have the same answer. Mm-hmm. Okay. And Shruti, Same. apart from me. You are obviously on the top of the list. Then the list is longer, so I can't name everybody now. ठीक है. Got it. And तो who is yours, Kalyan? मेरा I love Warren Buffett and Uh, but like he's not the fitness kind of a hero for me, but then I love him, to be honest. That is one of the reason why I am in the whole finance वाला thing. So I love him a lot. And I remember मुझे अचानक से ना एक रात को ऐसे सपने में आया था कि उनको कुछ हो गया, and next morning I was writing a email to him, and वो email अभी भी मेरे पास है. Like I wrote and I sent it to Berkshire Hathaway का this
उनकी कंपनी का नाम है बख्शिया हैथवे, ऑफ कोर्स उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा, बट इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी एंड ही इज अराउंड 1992, तो इट्स वेरी स्कैरी फॉर मी क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि ही इज ऑलवेज ईटिंग मैकडॉनल्ड्स का बर्गर एंड एवरीथिंग, सो आई एम वेरी स्कैर्ड फॉर हिम, आई डोंट नो ही इज स्कैर्ड फॉर हिमसेल्फ और नॉट, बट yeah, so that he is my Such a yeah, sweet gesture. yeah, I kind of love him. Yeah, Love so it so much. yeah, so next we'll go to fitness guru. Who is your fitness guru? So it could be anyone in particular, not has to be a public figure, it could be your gym trainer or your father or anyone. uh Ginny, let's start with you. So fitness guru. So for me, there are two people. One is my coach, who is a fitness coach since last 2+ years now, and other is the like founder of Fitter, who is JC. I like learn a lot from him on day-to-day basis, the discipline and everything, how he maintains. So these two people I learn a lot from, or are my gurus, I would say. Okay, and Palak, what about you? For me, once I have joined this art of living classes, so the trainer over there, the teacher over there who was teaching, I usually talk to him for all of these things for fitness and meditation. And one of my relative, like he's a fitness freak, so I generally talk to them and get inspired for this thing. And Shruti, you, apart from me, of course. Kalyan is like self promotion कर लेता हूँ. या बोलिए, आपका फेवरेट फिटनेस गुरु, फेवरेट एज इन योर मोटिवेशनल. To be honest, like Virat Kohli and Anushka, I follow them a lot because I don't know why. Matlab, there are a lot of reasons. These people, I believe, have an amazing lifestyle, the kind of lifestyle and everything they follow. So I just try to see and learn from them what they are doing in a day-to-day life, how to stay fit and everything. So I kind of learn from them, and then I had my fitness trainer back in Delhi. Now I don't have in Bangalore. So she was amazing. She was a very good friend of mine. So she taught me a lot of things. So she was the another person also. Okay, so Minu is also here. Hi Minu, thanks for coming. So my next question is, uh, anything that you have recently learned, कुछ नया सीखा हो आपने, and we'll start with Ginny. So मैं Something. तो फिटनेस का ही बोल सकती हूँ. तो recently I've started like learning like clap push-ups and clean and press. So these are the skills which I want to develop in 2023. तो ये इस पे काम चल रहा है. Great. And Palak, what about you? Uh, Hello, yeah, Palak. Hello. Yeah, go ahead. What have you recently learned? I I think think there is some issue with Palak. So I mean the connection with but Shruti, yeah, go ahead. Yeah. yeah, for me, I have done this social media thing and the work that I do. I'm learning that only currently. What about you, Kalyan? So I am. मैंने अभी recently ना, there is something called as a Nidra yoga. Now Nidra yoga is a kind of a meditation, and I have, मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, मैंने ट्राई किया था, बट मैं उसके बाद भूल ही गया ऑल टुगेदर. देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, बट मुझे वो ना रात में ही कर सकते हो, लाइक वाइल यू आर स्लीपिंग. यू कैन ट्राई दिस निद्रा योगा टाइप What is करके. the process? The process is basically it's a guided meditation where the, अगर आप YouTube पे सुन रहे हो तो वो आपको बताता है that you have to understand your each body part, you have to focus on, and you have to just focus on each aspect or each body part. इट्स अमेजिंग इन अ वे कि आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलता है अपने बॉडी के बारे में, बट द थिंग इज इट्स अ 50 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन, एंड बहुत टाइम ऐसा होता है दैट यू स्लीप 10-15 मिनट में ही यू Right. fall asleep, but it's an amazing thing, and it is also used for manifestations. तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़, तो इट गेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट रियली रियली हेल्प्स यू. So this is something that I really want to master, and I'm trying for that. So yeah, that is something that I'm trying.
Palak, yeah, what have you recently learned? From your story, Kalyan, I remembered one of my thing. Few years back, मैं yoga classes जा रही थी. So it's been a week. मैंने yoga class join किया था. So sir was teaching that savasan वाला yoga asan. तो उस पे it was like कि you will be laying down and he was guiding और तुमको चीजें like guide he was guiding so तुमको चीजें उसके according करनी थी. And what happened with me? I slept over there एंड पूरे बैच में कोई मेरे एज का वहाँ पे था नहीं. Every like people of around 30 to 40 age group was that. After I guess 15 to 20 minutes session, sir asked that everyone wake up and I was sleeping over there. Like I was sleeping over there in the whole class. So yeah, I remember this from your story. So yeah, but it is very helpful. Nowadays I'm trying, although I'm such a distracted person that I find it very difficult to focus. But yes, I'm trying to learn meditation. That is great. So my last question would be ki if you were supposed to write a book, what would it be about? Okay, starting with Ginny. My life journey. Because there are lots and lots of things to share, my experiences and everything. How I Okay. grew up. Yeah. एंड ज्यादा चैप्टर्स किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होंगे उसमें? Fitness, of course. Okay, cool. So let's go to Palak. Palak, what about you? Okay, so like I'll do a research and write a book for PCOD people because I find many of the people and many of the girls don't know that they have PCOD and they face it. So I really want to do this to aware people for this. Great. So Shruti, what about you? My answer would be similar to Ginny. Okay. एंड चैप्टर्स सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में होंगे? More, sorry. So the more chapters will be related to the things like we women go through in our lives, because in my life till now I have met a lot of women, and I have realized that there are a lot of things that women need to like discuss, talk, and learn and implement, but they don't do it because of lack of insecurity, lack of confidence, and a lot of reasons are there. So I feel this is something which is very, very, very important. And in the coming generation, all the things are changing nowadays. But still, I have realized that there are girls out there who are 18, 19, 20, 21, also 25. And they are also going through a lot of things, but they don't share. So I feel like, uh, you know, making all the generation of women bold and courageous is something which is very important, because otherwise I know I mean the reason we have so less CXOs, women CXOs, and then we have so less women in all the domains in industries out there, the reason is lack of courage and confidence, and the society is male dominated. So that is something I would love to, like, share something which can help others, and things can change for Great. better. So we have Raj with us. Hi Raj. uh Hi. Hi, hi Kalanvia. Hi, Shruti. Hi, Hi. Palak. Hi, Ginny. Hi, everyone. राज, अभी आप बताओ कि आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर नहीं, आप एक किताब लिखने वाले हो तो किस बारे में लिखोगे? Okay, it is going to be all about motivation, like self-help type of book. And the other question is like chapters, right? Right. या Hunger. भूख, वो स्निकर वाला? Hung- Boom. Nahi, Hunger for what? everything. Success, growth, and everything. Like everything that we can have, like that people want. उसी चीज के लिए. Got it. That is great, Raj. Thank you so much. I'm done with the rapid fire. I would like Shruti, to you ask can the proceed. same question to Kalyan also. अच्छा, मेरे okay, I Thanks. would say that that's a very difficult question. Okay, तो अगर किताब लिखनी होगी तो I would write more on finding a purpose in your life. That is something that I want to write about, because I think a lot of people don't focus a lot. But maybe अगर वो focus भी करें तो वो figure out नहीं कर पाते a lot of time. तो finding purpose would be something that I want to write about.
That would be something that I am interested. So yeah, that's my answer. Talking about the important chapters. Important chapter, as in it would be focused around finding inner happiness, and inner happiness, understanding yourself, more of centering around you, finding a peace, which is very important, because eventually it all comes down to finding the peace, right? अगर मैं 10,000 में भी खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, और कुछ लोग 50 लाख में भी खुश नहीं है, अब 50 लाख में कुछ खुश हैं, तो बेसिकली इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ मच इज एनफ. सो वो जो होता है एनफ कितना होना चाहिए आपके लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो एनफ समझ में तभी आता है व्हेन यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट you really value in your life, right? If you like Ferrari, that's great. You want that Ferrari. There's no harm in that. But if you're not clear कि आपको क्या चाहिए जिससे आपको खुशी मिलने वाली है, that is gonna be very difficult for you. So that's the thing I'm more focused about. Yeah, I'm done. Shruti, you can ask the last question if you want to. Yep. Yeah, sure. So, last and I think one of the most important question we have for today is all of us most of the times find it very difficult to stay motivated to do our exercises and going to gym. So, what is the right way and how can we deal with this, like how to stay motivated and consistent while doing exercises or going to gym? जैसे न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन ले लेते हैं, बट उसके बाद it is very difficult to follow it up after a week and so what can we do? Okay, so every day you cannot be motivated. Even if I'm training since long years, it's not like every day I'm motivated to go to gym and do my workout or eat healthy. But it's like how much you value yourself, okay? तो इस वे में सोचो कि जब आपको कोई बीमारी होती है, तब दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जब आपको हील होना होता है, एंड आप बहुत हेल्दी खाते हो, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो कि आप जल्दी हील हो जाओ. सेम गोज विद योर बॉडी, यू हैव टू कीप इट फिट एंड हेल्दी. वो आपकी नेसेसिटी है नाउ कि उसको सही रखो, तो उससे आपका ओवरऑल को काम भी इफेक्ट होता है. जब जो भी कर रहे हो लाइफ में, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू keep yourself healthy, be it gym, be it walk, be it anything, be it eating healthy. तो आप अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करें. आप जैसे खाना नहीं भूलते हैं, या सुबह उठ के ब्रश करना नहीं भूलेंगे, या पानी पिए बिना आप पूरा दिन नहीं रह सकते, सेम गोज विद द हेल्थ, न्यूट्रिशन, वर्किंग आउट. तो मोटिवेशन तो नहीं रहेगा, इट्स लाइक इट्स एन ओवररेटेड टर्म. बट हाँ, आपके लिए जरूरी है वो, तो आपको वो करना है. इट्स अ नेसेसिटी फॉर योर हेल्दी माइंड एंड बॉडी टू डू अ डे टू डे एक्टिविटी ऑल्सो. तो आप उस वे से सोचेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. और ऐसे नहीं है आप ये सोचो अभी मुझे 10 किलो लूज करना है. टेक स्मॉल स्टेप्स. आप ये कोशिश करो कि आज आपने 10 मिनट वॉक किया, तो कल आप 15 मिनट वॉक करने का ट्राई करो. Go one by one and adapt it. That's what I would say. Thank you, Jini, for sharing this. Thank you It was so much, very Ginny. Yeah, go ahead, Shruti. no, I was saying it was very it is something very helpful. Like, so the basic thing is that we need to adapt it into our lifestyle. That is the most important way to think about it, and the kind of mindset we need to develop. Talking about the consistency and motivation when it comes to exercising and going to gym. So thank you, Jenny, for sharing this. Abhijit have raised his hand. Abhijit, you have any question? I No, think I he think Abhijit का hand पहले से raised था. So Hmm. we are done with everything. Thank you so much, Ginny, for answering all these questions. And I'm बहुत time से we have been doing this space, like काफी time हो गया, 1-1.5 घंटे से we are doing this space. Thank you so much. Thank you so much for taking this time and doing this amazing space. Yeah, Ginny, you want Thank you to? so much, Kalyan and Shruti, for having me here, because it was great interacting with everybody and sharing my experiences here. Most importantly, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट मुझे भी कुछ ना कुछ तो सबसे सीखने मिला है, जैसे पलक से रिगार्डिंग योगा एंड एवरीथिंग, फ्रॉम यू ऑल्सो एंड फ्रॉम श्रुति. सेम, आई कुड शेयर माई नॉलेज. आई एम मोर हैप्पी टू शेयर इट विद एवरीबडी.
Great. So, Shruti, you want to say something? Last words? No, I only want to say thank you to Jini that she took some time to join us today in this space. And so thanks a lot. I'm not able to understand. My voice is echoing. I'm able to, I'm hearing myself again and again. That's because मेरा mic on था, but ठीक है, अब बोलो. No, so I was saying, like, thank you, Jini. Thank you so much for getting some time out of your hectic schedule and then talking with us. And one thing which I very much appreciate about Ginny is that she's an engineer. She's working a full time job and then she's doing all of these things. This is something which is very very inspiring for me and a lot of people out there who know Ginny. So thank you so much, Ginny, for joining us. Also, Ginny came to Twitter only because of we people. So that is next level effort that she have put for this space. So thank you so much, Ginny. And also again, I would love to like stay in touch with you because of the insights and everything. You're such an amazing person. Thank you so much, Shruti. And anytime you can reach out to me, I'm happy to help anybody who wants anything. Yeah, any kind of help related to fitness. I'm happy to help. Definitely. Thank you so much. So जिनी ने अभी 20 followers भी क्रॉस किया, so congratulations जिनी. And if you keep continuing this, you and because मैं पलक राज इवन श्रुति हम सब इसी like ट्विटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए एक दूसरे से. And we can vouch on this fact कि Twitter is an amazing social media application that you can use and you can grow your audience and you continue doing that. So I have seen that आप कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली अपना जो वर्कआउट्स है अपने जो रिजीम्स है वो सब डाल रहे हो इस पे ट्विटर पे. दैट इज ग्रेट. सो कंटिन्यू डूइंग दैट जिनी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. या जिनी यू वांट टू Thank, से समथिंग? thank you, Kalyan. I would say thank you to having me come to Twitter because Twitter was something I was not aware of. Because of you, I came here, and it's a amazing platform. I would say slowly I learned more about Twitter, and I'll be active more hopefully. क्या सो विद दिस ये मैं एंड श्रुति बहुत ज़्यादा इसके लिए excited थे for this particular space because it was all about the weight training and Ginny was involved in this. The next space that we are having in like 11th of January. थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग. It's all about imperfect parenting जहाँ पे we are gonna talk about the whole parenting stuff and we are gonna talk about sex education. We are gonna talk about porn. We're getting an expert here and it is going to be an amazing space like this was. So stay tuned and keep following us. And Jini को अगर आपने follow नहीं किया तो you can do that as well. Thank you so much, guys. And I think it's time for closing the space. So let's do that in 3, 2, 1. Bye, guys. Thank you so much. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye, bye. Tada. Good night. Good night. Thank you for listening to us. And if you want to participate in live spaces, just follow our Twitter handles. हम ऐसे spaces हर हफ्ते करते हैं. And अगर आपको ये पसंद आया तो follow करना हमको and share this podcast. Thank you so much and see you next week. Bye bye.